Hello students, welcome to the second video in our PYQ discussion series. This series focuses on the mathematics section of the IITJAM economics paper. In this video, we will discuss PYQs related to single variable differential calculus. आज के वीडियो में हम सिंगल वेरिएबल डिफरेंशियल कैलकुलस के PYQs को डिटेल में समझेंगे. We have split this video into two parts. In the first part, we'll revisit some essential concepts that will form the foundation for our subsequent discussion. In the second part, we'll provide detailed solution to the PYQs. If you find this video helpful, please like, share and subscribe to our YouTube channel. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. Thank you for joining in. Let's begin by exploring the fundamentals. Okay, so let us start with a little background. We'll recap concept related to sequence, series, limit, continuity, and differentiability. Let us start with the first concept, and that is sequence. In sequence, the most important result that we'll have a look is the following. Every convergent sequence is bounded. However, the converse may not be true. So, by a convergent sequence, we mean a sequence having a limit. तो जो sequence का limit होता है उसे हम convergent sequence बोलते हैं. For example, if you consider the sequence 1 upon n. So this particular sequence will have terms 1, half, 1/3, 1/4 and so on. So definitely this sequence has a limit and that limit is 0. And therefore this is a convergent sequence. Now note carefully that sequence is bounded as well. Why? Because whatever term you are choosing from that particular sequence, it's all lying between 0 and 1. ये सीक्वेंस का कोई भी टर्म आप ले लीजिए, डेफिनेटली वो 1/n फॉर्म में है और 1/n फॉर्म में है मतलब उस टर्म 0 और 1 के बीच में है. तो ये 0 और 1 ये दोनों बाउंड्स है. Bounds of the sequence. This is the 0 is the lower bound and 1 is the upper bound. Now this particular phenomena, that whenever a sequence has a limit, this particular sequence has a limit and this sequence is bounded as well, is true for any convergent sequence. कोई भी convergent sequence आप ले लीजिए, that must be bounded. Well, the converse of this result is not true. That means you will have a bounded sequence which is not convergent. जैसे convergent sequence bounded होगा ही, bounded sequence convergent नहीं भी हो सकता है. Example is -1 to the power n, this sequence. इस sequence का term क्या है? -1, 1, -1, 1 and so on. So आप देख सकते हैं इस sequence का कोई भी term आप ले लीजिए, वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि वहां पे तो दो ही टर्म है. तो डेफिनेटली दिस इज अ बाउंडेड सीक्वेंस, बट डेफिनेटली इसका कोई भी लिमिट नहीं है. सो दिस इज नॉट कन्वर्जेंट. इट हैज नो लिमिट. वेल, now let us come to the
next result. The next result that we will discuss, that is also on sequence, and for that we require the idea of monotonic increasing and monotonic decreasing sequence first. What is a monotonic increasing sequence? Monotonic increasing sequence वो है इसका टर्म n बढ़ने के साथ बढ़ता है. So if you have a sequence an, मतलब अगर तुम्हें आपका पास एक सीक्वेंस है जिसका टर्म्स एन फॉर्म में है, n इक्वल टू 1 बिठा के आपको मिल जाएगा फर्स्ट टर्म a1, 2 बिठा के सेकेंड टर्म a2 एंड सो ऑन, तो उसे हम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कहेंगे. और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कहेंगे इफ an increases as n increases, like a2 is bigger, a2 2 is bigger than 1, so a2 have to be bigger than or equal to a1. Similarly, a3 has to be bigger than equal to a2 and so on. So a sequence an is monotonically increasing if it obey the inequality a1 less equals to a2 less equals to a3 and so on. Very easy example is sequence n, जिसका फर्स्ट टर्म है 1, सेकेंड टर्म 2, थर्ड टर्म 3 एंड सो ऑन. सो इस सीक्वेंस में आप देखिए सेकेंड टर्म इज बिगर देन इक्वल टू फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म इज बिगर देन इक्वल टू सेकेंड टर्म एंड सो ऑन. सो डेफिनेटली दिस सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग. सिमिलरली आप जब मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस बोल रहे हैं उसका मतलब है एन बढ़ने के साथ साथ एन का वैल्यू घट जाएगा. मतलब a1 this time will be bigger than equal to a2, a2 will be bigger than equal to a3 and so on. So ऐसा सीक्वेंस का एग्जाम्पल है 1 by n, क्योंकि यहां पे फर्स्ट टर्म मतलब a1 है 1 which is bigger than equal to second term half, bigger than equal to third term 1/3 and so on. So this is an example of monotonically decreasing sequence. Okay, so the next concept, that next result involves idea of monotonically increasing or decreasing sequence, and that result says that if you start with a monotonically increasing sequence, it will be convergent if it is bounded above. अब ये सीक्वेंस कंसीडर कर लीजिए -1/n. ये सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म क्या है? -1, सेकेंड टर्म -1/2, थर्ड टर्म -1/3 एंड सो ऑन. Okay, now note one thing, this -1, the first term, is less than equal to -1/2, -1 से बड़ा है. Second term is bigger than equal to first term. Now -1/2 is less than equal to -1/3, so definitely this is a monotonically increasing sequence. Now note carefully, whatever term you are taking, it is of the form -1/n, and hence this is always less than equal to 0. So 0 इस सीक्वेंस का एक अपर बाउंड है. इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है ये बाउंडेड अबव है. तो आपके पास मिल गया एक monotonically increasing bounded above sequence. Now note that this sequence has a limit. इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है. क्या है वो लिमिट? उसका लिमिट है 0. So that means
this is a convergent sequence. So this is example of a monotonically increasing bounded above sequence which is convergent because इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है. So this particular phenomena is true for any monotonically increasing bounded above sequence. आप कोई भी monotonically increasing bounded above sequence ले ले, वो हमेशा हमेशा convergent होगा. Similarly, if you consider any monotonically decreasing bounded below sequence, वो हमेशा convergent होगा. For example, you may consider 1 by n. 1 by n is a monotonically decreasing sequence. क्यों? उसका first term है 1, second term है half, third term 1/3. So we can see that the values are decreasing as n increases. So definitely this is a monotonically decreasing sequence. Again, आप कुछ भी term ले लीजिए 1, half, 1/3, everything is less equals to 0. Okay, here it will be greater equals to 0. Sorry, I'm sorry. This is correct. This is correct. Yeah. So I'm sorry. Bounded below. This is greater equals to 0. Yes. So definitely this is a bounded below sequence as well. 0 is a lower bound. So this is example of a monotonically decreasing bounded below sequence और उसका लिमिट एग्जिस्ट करता है. वो लिमिट क्या है? वो लिमिट है 0. So that means this sequence is convergent. Well, now let us come to our next result that will require, and that is called Cauchy's first limit theorem. What does it say? It says if you have a sequence an having limit L, then the sequence of arithmetic mean of the term is also L. एक एग्जाम्पल से समझाते हैं. आप ये सीक्वेंस से स्टार्ट कीजिए 1 by n. इसका टर्म्स क्या है? फर्स्ट टर्म है 1, हाफ एंड सो ऑन. और इसका लिमिट है 0. आप एक सीक्वेंस बना लीजिए जिसका फर्स्ट टर्म होगा अरिथमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ द ओरिजिनल सीक्वेंस. तो 1 ही रहेगा फर्स्ट टर्म. सेकेंड टर्म होगा arithmetic mean of first two terms. That means 1 plus half by 2. Third term होगा arithmetic mean of the first three terms. So 1 plus half plus 1/3 by 3 and so on. So आपको एक नया सीक्वेंस मिल गया और जो नया सीक्वेंस मिला वो सीक्वेंस का लिमिट भी सेम होगा. इसका लिमिट आपको देखने का जरूरत ही नहीं है. कॉचीज फर्स्ट लिमिट थ्योरम बोल रहे हैं, इसका लिमिट भी 0 ही होगा. तो ये नोटेशन को थोड़ा अच्छी तरह से समझते हैं. इसका मतलब क्या है? ये नोटेशन का मतलब है कि nth टर्म इज 1 by n times a1 plus a2 up to an. So nth term of the sequence is arithmetic mean of first n elements of the original sequence. So this is the sum of first 10 elements.
So definitely when you are taking n to be 1, this is becoming a1 by 1. When you are taking n to be 2, the second term of the sequence is a1 plus a2 by 2. Third is a1 plus a2 plus a3 by 3 and so on. एंड अगर आपका ओरिजिनल सीक्वेंस an का लिमिट l है तो इसका लिमिट भी l ही होगा. Well, let us now come to the next result, which is a result involving series. It says that if you have a convergent series means series having sum, जिसका sum exist करता है, having finite sum, जैसे summation 1 upon 2n, n running from 1 to infinity. ये इनफाइनाइट सीरीज का सम फाइनाइट है. थोड़ा याद कर लेते हैं इस सीरीज को. लुक केयरफुली. दिस इफ यू एक्सपैंड द सीरीज it will be like this: half plus 1 upon 2 square plus 1 upon 2 cube and so on. So this is what? This is the infinite GP series. So if you find the sum, you will be getting first term upon 1 minus half. So you will be getting half upon half, so that is 1. So this is finite. और फाइनाइट का मतलब है ये सीरीज कन्वर्जेंट है. सो ऐसा कुछ भी सीरीज ले लीजिए, देन उसका जो nth टर्म है, इस सीरीज का nth टर्म क्या है? 1 upon 2 to the n. जब आप इसका लिमिट ले रहे हैं as limit n tends to infinity, you will be getting 0. So this is true for any convergent series. कुछ भी convergent series ले लीजिए, summation n form में, where n runs from 1 to infinity, then limit n must tend to 0. अब देखिए इसका converse true नहीं है. When you are considering the converse, you cannot say whenever this is true, the corresponding series is convergent. Example, the famous example is 1 plus half plus 1/3 and so on. So ये जो सीरीज है, मतलब जिस सीरीज को हम लिख सकते हैं समेशन 1 by n फॉर्म में, ये सीरीज का nth जो टर्म है, इसका लिमिट 0 है. So this condition, this statement is true, that limit of the nth term is 0. But this series is not convergent. This is a famous fact that this series is not convergent. इसका sum finite नहीं है. So that is the counter example for the converse. Well, that much we require for sequence and series part. Let us now move to the limit part. So from limit, the first result that we will discuss is the following. That basically involves the definition of limit. जब किसी भी फंक्शन का right hand limit and left hand limit exist करता है and they are equal, then we'll call limit to be existed at that point. So if the point is C, which is an interior point of the domain of f, then limit will exist at that point of a function if left hand limit and right hand limit are equal
at that point. And when value of the limit is equal to the value of the function at that point, अगर C में जो लिमिट है उसके साथ फंक्शन का वैल्यू इक्वल है at that point, then we'll call that to be continuous. The function will set to be continuous at C. Now we'll discuss one result that will interconnect the idea of limit of a sequence and limit of a function. Suppose आपके पास एक फंक्शन है जो पॉजिटिव x के लिए डिफाइंड है. Say for example, you are considering the function fx to be x sine 1 by x. So definitely this function is defined for x greater than 0. अब इस फंक्शन का लिमिट क्या है? When you are considering the limit of the function, limit of fx as x tends to infinity, this will be limit x tends to infinity x sine 1 by x. So if you take a new variable y to be 1 upon x, then that will be limit y tends to 0 sine y by y. So definitely the value of the limit is 1. तो इस फंक्शन के लिए L का वैल्यू 1 है. And now if you construct a sequence by replacing x with n, मतलब if you consider the sequence fn means हम जहां जहां x था वहां पे n बिठा देंगे. So it will be n sine 1 upon n, n sine 1 upon n. So this is the sequence. So that means if you expand it, the first term will be 1 sine 1. Second term will be 2 sine half. Then 3 sine 1/3. And so on. So this sequence will also have the same limit. ये जो sequence मिल गया इसका लिमिट भी सेम होगा. आपको पहले लिमिट मिला था 1, यहाँ पे भी लिमिट 1 ही होगा. So in general, if you have a function fx which is defined for all x greater than 0, and if limit fx as x tends to infinity is L, then the sequence fn has limit L as well. So that is an important trick that we'll be using in our subsequent sums. So we'll illustrate it with another example, and that is also a very important example, and that is this. So this is a very well-known fact that limit x tends to infinity 1 plus 1 upon x to the power x is e. Now note carefully, this is basically limit of the function fx x plus 1 upon x to the power x, and that function is defined for x greater than 0. Now if you take the limit of fx
as x tends to infinity, we know from this that this is E. Now, due to our previous result, if you replace x with n to construct a sequence fn, that means the nth term of the sequence is n plus 1 by n to the power n, then इसका लिमिट भी E होगा. Well, for us this may be a well known fact as well, but इसके लिए आपको इसके लिए ये लिमिट E है, ये दिखाने के लिए आपको दूसरा कुछ कैलकुलेशन या डिडक्शन की जरूरत नहीं है. आप यहां से इसे डायरेक्ट बता सकते हैं लास्ट रिजल्ट यूज करके. Well, that much was required from limit and continuity part. Let us now move to the part of differentiability. The required result from differentiability starts with the definition. Suppose you have a function f और c उसका एक इंटीरियर पॉइंट है. जैसे if you are considering say the open interval 1 3. अब 1 3 के अंदर if you consider the point 1.7, तो डेफिनेटली 1.7 1 3 के बीच में एक पॉइंट है. So this is definitely, this 1.7 is definitely an interior point of that 1 3. So ऐसे f फंक्शन का जो डोमेन है उसका एक इंटीरियर पॉइंट है c. Then we'll call f dash c exist, मतलब c पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है अगर लिमिट x tends to c plus fx minus fc by x minus c and limit x tends to c minus fx minus fc upon x minus c दोनों ही एग्जिस्ट करेगा एंड दे मस्ट बी इक्वल. यहां पे जो लिमिट हमने लिखा है, लिमिट x tends to c plus, this is called the right hand derivative of f at c and इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ f at c. अब जब ये राइट हैंड डेरिवेटिव और एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव c पॉइंट पे इक्वल है तो हम बोलते हैं कि f फंक्शन c पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है और उस फंक्शन का डेरिवेटिव का वैल्यू एक्चुअली ये इक्वल वैल्यू हो जाएगा. मतलब f dash c इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट c एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का जो इक्वल वैल्यू था वही एक्चुअली डेरिवेटिव का वैल्यू होता है. सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ डिफरेंशिएशन. नाउ a very important result regarding this part is the idea of increasing and decreasing function. तो सपोज आपके पास एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, एक फंक्शन जिसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कोई भी इंटरवल में. अब उस इंटरवल में अगर फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव है, देन ये फंक्शन वहां पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा. जैसे सपोज आपके पास एक फंक्शन है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये फंक्शन डिफाइंड है x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में. देखिए ये एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है ना, दिस इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन. आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं इस फंक्शन को. अब when you are taking the derivative of this function, what are you supposed to get? 2x. और देखिए ये 2x का जो वैल्यू है वो 1 से 2 के बीच में हमेशा पॉजिटिव है, स्ट्रिक्टली बिगर देन 0. इसीलिए
ये फंक्शन 1 से 2 के बीच में इंक्रीजिंग होगा. So if you draw this function, how does it look like? This will look like this. अब देखिए, अगर ये 1 पॉइंट है और ये 2 पॉइंट है, अब देखिए ये जो वन से 2 के बीच में it is going upward, the function is going upward, it is increasing. So this is what the result says. It says if the derivative of the function is bigger than 0, then the function will be increasing in that part. Similarly, अगर आपके पास एक फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव लेस देन 0 है कुछ इंटरवल में, देन उस पार्ट में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है. जैसे आप देख सकते हैं, सेम फंक्शन आप यूज करते हैं, हम बस उसका इंटरवल चेंज कर देते हैं. यहाँ पे भी हम सेम फंक्शन यूज कर ले, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बस इसका इंटरवल चेंज करके हम -2 to -1 कर देते हैं. अब देखिए, आप जब अब एफ डैश एक्स लेंगे, उसका वैल्यू 2x विल बी लेस देन 0, और 2x का वैल्यू 0 से छोटा, मतलब ये अकॉर्डिंग टू इस थ्योरम उस पार्ट में मीन्स फ्रॉम -2 to -1 ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा. एक्चुअली अगर आप इसका काफ को भी देखेंगे, तो इफ इट इज -1, इफ इट इज -2, देखिए -1 से -2 से -1 के बीच में ये फंक्शन डिक्रीज ही कर रहे हैं. सो दैट वाज द रिजल्ट सेज, इफ डैश एक्स बिगर देन 0 है तो फंक्शन ऊपर जाएगा, अगर ये लेस देन 0 है तो फंक्शन नीचे आएगा. So that is an important result for us that we'll be using subsequently. And now the final result of this section is this, that if at some point the derivative has value 0 and double derivative has value negative, तो उस पॉइंट पे उस फंक्शन का एक लोकल मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा. और अगर उसका वैल्यू उस पॉइंट पे 0 है और उसका डेरिवेटिव का वैल्यू सी पे 0 है और डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो उस पॉइंट पे उसका एक लोकल मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा. तो ऐसे हम फंक्शन का लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू ढूंढ सकते हैं. सो फॉर द टाइम बीइंग दैट मच इज एनफ टू डिस्कस द subsequent part. That means our PYQs, those were asked during 21 to 24 in JAM economics paper.